सुप्रीम कोर्ट में रेबीज मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु पर सुनवाई, क्या संविधान अनुमति देगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज के लाइलाज मरीजों को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेशिया देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। यह याचिका ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल नामक एनजीओ ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और एक बार लक्षण प्रकट होने के बाद मरीज को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपनी इच्छा से जीवन समाप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे दर्दनाक मौत से बच सकें। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार से जुड़ा है, जिसे 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के रूप में व्याख्या किया था। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियम रेबीज मरीजों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी पीड़ा के लिए कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के तहत यह तर्क दिया जा रहा है कि रेबीज मरीजों की स्थिति अन्य बीमारियों के मरीजों से अलग है, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु से वंचित करना भेदभावपूर्ण होगा। वहीं अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के तहत यह तर्क दिया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन और शरीर के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई थी, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथनेशिया अभी भी अवैध है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या को अपराध मानती है और धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने को दंडनीय अपराध घोषित करती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है और यह 100% घातक है, ऐसे मरीजों को अनावश्यक पीड़ा से बचाने के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में इच्छा मृत्यु के कानूनी और नैतिक पक्ष पर एक नई बहस छेड़ सकता है। Supreme Court to hear plea on passive euthanasia for rabies patients, constitutional debate rekindled. In a significant legal development, the Supreme Court of India has agreed to hear a petition advocating for the allowance of passive euthanasia for terminal rabies patients. The plea, filed by the NGO All Creatures Great and Small, argues that rabies, which has a nearly 100% fatality rate once symptoms appear, causes excruciating suffering. The petition urges the court to recognize the right of such patients to opt for physician-assisted death to avoid prolonged agony. Constitutional backing for euthanasia in India. The case brings into focus fundamental rights enshrined in the Indian Constitution, particularly Article 21, Right to Life and Personal Liberty. The Supreme Court, in Common Cause vs. Union of India, 2018, interpreted this article to include the right to die with dignity. The ruling allowed passive euthanasia and recognized living wills, ensuring that terminally ill patients could refuse life-sustaining treatment. However, the current petition argues that this does not extend to rabies patients, who do not have access to effective palliative care. Article 14, Right to Equality. The petition contends that rabies patients form a distinct category due to the disease's violent progression and inevitable fatality. The argument is that denying them access to euthanasia while allowing it for other terminally ill patients violates their right to equality. Article 19, Right to Freedom. The plea asserts that personal autonomy, a crucial aspect of Article 19, should include the right to make end-of-life decisions, particularly in cases of extreme and incurable suffering. India's legal stand on euthanasia. Passive euthanasia, where life support or treatment is withdrawn, was legalized in 2018, but active euthanasia, which involves administering life-ending drugs, remains illegal under the Indian Penal Code. IPC Section 309 criminalizes suicide, and Section 306 penalizes assisted suicide. The petition argues that in rabies cases, where no life-saving treatment exists, even passive euthanasia is ineffective, necessitating a broader legal framework for mercy killing. The ethical and legal debate.
The Supreme Court's decision to hear the petition has reignited discussions on euthanasia in India. Supporters argue that denying terminal rabies patients the choice to end their suffering contradicts the principles of dignity and personal liberty. Opponents fear that expanding euthanasia laws could lead to misuse and ethical dilemmas regarding the sanctity of life. As the case proceeds, the judiciary will have to balance constitutional rights, medical realities, and ethical considerations. If the court rules in favor of euthanasia for rabies patients, it could lead to a historic shift in India's approach to end-of-life care and medical ethics.